Hello everyone, welcome to the Bitesize Medicine with me Dr. Wagma. I hope आप सब ठीक होंगे. आज I want to talk about atopic dermatitis जिसको हम eczema भी कहते हैं because winters are coming and it get very common in winters. It's one of the type of the dermatitis. इसके बहुत common दूसरे types भी है seborrheic dermatitis और contact dermatitis जिसके ऊपर हम बात करेंगे. But today let's talk about atopic dermatitis. Actually what it is, it's when you have this dry itchy flaky skin, inflamed bhi hoti hai, so we call it eczema. It's very common in young children, but you can see it in all age group mein dikhta hai. It's not contagious, but it's irritating. Now what causes eczema? Well, some people it's due to the gene variation. उसकी वजह से आपकी जो स्किन की नेचुरल बैरियर होते हैं दे बिकम वीकन एंड दे कांट प्रोटेक्ट यू एंड दे कांट कीप द स्किन मॉइस्चराइजर and then you get problems with allergens, environmental factors. They all like tobacco smoking, they all started affecting you. And some people it's due to the buildup of this bacteria Staph aureus जो अच्छे वाले बैक्टीरिया को कम कर देता है एंड दैट ऑल्सो डिस्टर्ब आपके स्किन का जो फंक्शन होता है उसका बैरियर वीक कर देता है. सो यू गेट इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेम्ड हो जाती है स्किन. दैट्स अनदर कॉज ऑफ इट. who are at the risk of getting it? So people can get atopic dermatitis who already had eczema or hay fever or eczema in the past. So these and family history plays a big role here also, that people who have it can run in their families. Now what complications can you get with atopic dermatitis? People with atopic dermatitis can develop hay fever, as I said, or you can have eczema either before atopic dermatitis or after developing atopic dermatitis. The main problem which I feel is chronic, it's called neurodermatitis. It's like chronic itchy scaly skin hota hai. So it starts with a patch of this itchy skin and आप उसको बार बार स्क्रैच कर रहे हो तो टेम्पररी आपको रिलीफ मिलता है बिकॉज आपने इच किया, आपको रिलीफ मिला, बट आपने स्किन में नर्व फाइबर एक्टिवेट किए जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और होंगे. सो टेम्पररी तो आपको रिलीफ मिला बट दैट स्क्रैचिंग विल कॉज मेन प्रॉब्लम्स. सो सोचिए आपने उसको इतना स्क्रैच किया तो आपने स्किन में सोर्स बनाए, लाइक इट्स ऑल इन्फेक्टेड, तो अब सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो सकते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस. दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है. पीपल किसी को एलर्जन हैंड डर्मेटाइटिस होता है, जो लोग जिन लोगों के हैंड्स वेट होते हैं और यार दे डू अ जॉब लाइक दे आर एक्सपोज टू दिस हार्श सोप्स और डिटर्जेंट and their hands are almost in the water all day, so they can have these hand irritant dermatitis. And then people have so many problems with hands, they get contact dermatitis also. Some people are if they're allergies, they have these allergy to different substance, and then when they are in contact to that substance you get that contact dermatitis, allergic contact dermatitis to any substance. So many people react to different substance and then you make these symptom hota hai, you make these hives, we call it urticaria. Now the main problem comes when you itchy wali skin to heal ho jayegi, we give you medication, everything will be okay, heal ho jayegi, but now comes the main problem. You make either your skin become hyperpigmented wahi area, or it becomes hypopigmented. In us it's more like a hyperpigmented area, and for that to get fixed it takes months to heal out. And some people have sleep problem with it because वो रात में itch करते हैं and they don't sleep with it. So you also get mental problems, like आपको depression हो जाती, anxiety हो जाती, because आपका sleep pattern ख़राब होते हैं, you can't sleep well and you keep on itching all night. So these are some complications of atopic dermatitis. Now we'll talk about treatment. Now what about the symptoms? So the symptoms really vary from person to person and it can appear anywhere on the body.
So you can have dark thickened skin, you can have itchiness, pruritus, किसी को होता है किसी को नहीं होता. You can have a rash over that swollen skin, and उसका color depend on your skin color. It can be oozing or crusting. The rash again darken होता, you'll see अगर किसी को face पे है तो I've seen it in people under the eyes, so you'll see this darkened skin around the eyes. You can see raw sensitive skin because आपने उसको इतना scratch किया होता है कि वो raw sensitive होता है. You see dark, you can see raised bumps, and it's more common in brown and dark skins. You see that. So it depends how bad it is. And it starts at the age of 5 and it can go into your teens and adulthood. And again I've seen people कि लोगों को होता है and वो clear हो जाता है, but then the flare up happen and it's gone like for months and for years, and all of a sudden it comes back. So that's the thing with contacts. You have to really take care of it. I'll also tell you how to prevent it so you don't get it. Now how can you prevent flare up like eczema? अगर आपको atopic dermatitis है तो आप उसको prevent कैसे कर सकते हैं? हर किसी को different तरीके से होता है. You should moisturize your skin twice a day with जो अच्छा moisturizer हो, ointment, creams, shea butter. If there's so many, I will not name the product, but these are ointment, creams, lotions, shea butters and all of that. You can actually moisturize your body twice a day. Limit your bath. You should shower every day with warm water, not hot water. And limit your bath ka time. Once you take a bath, pat dry your body and then apply your moisturizer. बच्चों में आप पेट्रोलियम जेलीज यूज़ कर सकते हो. इट्स अ वेरी खूबसूरत और इट रियली क्रिएट अ बैरियर. सो यू कैन यूज़ पेट्रोलियम जेली ऑल्सो इन योर किड्स. ना बहुत सारे लोगों को अपने फ्लेयर का पता होता है. सो इफ़ यू नो इस चीज़ से आपको फ्लेयर अप होगा तो आप उनको अवॉइड करिए, बिकॉज जब आपको किसी चीज़ से इच शुरू हुई, इच के बाद आपको फ्लेयर अप ही होगा. सो किसी को वूल से होता है. देखा होगा बहुत सारे लोगों को वूल फैब्रिक से होता है. somebody gets it from dry weather, somebody gets it from cold मौसम से. किसी को स्वेट से होता है, किसी को फ्रेगनेंस से होता है. And the body soaps you should use should be non-soap cleanser, should be dye, alcohol and fragrance free. The soaps and the showers gels that you use. So हर किसी को पोलन से होता है, किसी को डस्ट से होता है, किसी को मोल्ड से होता है. तो हर किसी का ट्रिगर पॉइंट डिफरेंट होता है. बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा दे गेट ट्रिगर्ड विद एग्स और काउ मिल्क. हर किसी का ट्रिगर पॉइंट डिफरेंट है. सो अवॉइड दैट and keep your body moisturized with a good these oil जो भी है good moisturizer to avoid आपका flare point. I hope आप लोगों ने इसमें से कुछ सीखा होगा. If you guys want to ask me anything, please write down in the comment. I'll be more than happy to answer. See you tomorrow. Have a good day.